Namaskar dear students and welcome to my YouTube channel Yes 400 Plus, a channel dedicated for the preparation of mathematics for civil services mains, optional mathematics, for B.Sc mathematics, CSIR नेट एग्ज़ाम और बाकी दूसरे सारे एग्ज़ाम्स जिसमें मैथमेटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है करिकुलम का, तो उन सब के लिए ये सीरीज ऑफ सॉल्यूशन ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक ऑफ लोनी, स्टैटिक्स बुक ऑफ लोनी, इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। और आज की इस क्लास में हम लोनी की किताब का, स्टैटिक्स पर जो लोनी की किताब है उसका चैप्टर 2 का 29 क्वेश्चन है उसमें। तो आज हम क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक को सॉल्व करेंगे और जहां जहां आवश्यक होगा वहां मैं आपको पूरा कंसेप्ट भी समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Two forces act an angle of 120 degree. The greater is represented by 80 and the resultant is at right angle to the smaller. Find the later. Now first of all let us see the figure. So this is the figure. Okay, तो ये force एक P है और ये force Q है। अब ये जो greater force है ये 80 यानी कि Q is equal to 80. Okay. And this angle is obviously given to be 120 degree, correct? And resultant is right angle to the smaller, so this angle is obviously 30 degree. Okay, find the force P. तो ये बहुत सरल सवाल है, बेसिकली एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिस इज P, so this is also P, correct? But we know that DC upon DA equal to sine 30 degree means DC equal to P equal to DA. DA is Q and Q is 80. Sine 30 means 80 into half equal to 40 Newton or whatever. Okay, the unit may be the forces. So this answer is 40. Simple, easy question. Next, if one of the two forces is double the other, so if one force is P, the other force is 2P, and the resultant is equal to the greater force, so R is equal to 2P. Find the angle between the forces. So we know that R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. Now here we have Q equal to 2P. So this is R square is 4P square equal to P square plus 4P square, 2P and Q is 2P cos alpha. Simple. So this is 0 equal to P square into 1 plus 4 cos alpha, means 1 plus 4 cos alpha equal to 0. Cos alpha is equal to minus 4, so alpha is equal to cos inverse minus 1 by 4. Obviously obtuse angle है between the two forces. Next question. Two forces acting on a particle are at right angles and are balanced by a third force making an angle of 150 degree with one of them. The greater of the two force being 3 kg force, what must be the values of the other two? Okay, so let us see the figure. तो ये force है एक, say P, this is Q, ये दोनों right angle पर हैं and are balanced by a third force, say S, making an angle of 150 degree with one of them. So this is 150 degree. The greater of the two force being 3 kg force. अब इनमें से दोनों में से बड़ी force 3 kg की है। एक बेसिक चीज याद रखिए, the resultant of two forces is always located near the greater force. Okay, अब सवाल है कि ग्रेटर कौन सा है। तो चूंकि ये बैलेंस किए हुए है, फोर्स ए ई बैलेंस किए हुए है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, AD इज द रिजल्टेंट। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 30 डिग्री
and this angle is 60 degree. तो चूंकि रिजल्टेंट कंपैरेटिवली नियरर है इस ए बी फोर्स के यानी कि फोर्स पी के, सो पी इज ऑब्वियसली ग्रेटर एंड देन पी इज निश्चित रूप से पी इज इक्वल टू 3. ओके, अब हम इसमें लेमीज थ्योरम लगाएंगे और यहां पर सो दिस पी इक्वल टू 3, सो पी अपॉन साइन दिस इज ऑब्वियसली 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इक्वल टू Q equal upon sine 150 degree equal to S upon sine 90 degree. Okay, but S is obviously the resultant, that is R. So this is R. Sine 90 degree is 1, so this is R. So P is 3 and sine 120 degree, sine 90 plus 30 means cos 30. Cos 30 means root 3 by 2 equal to Q upon sine 150. Now sine 150, sine 90 plus 60 and cos 60 means 1 by 2 means 2Q. Okay, equal to R means Q is equal to root 3 and third force, that is R, is equal to 2 root 3. Answer. Okay. नेक्स्ट. अच्छा, यहां पर आप इसको S भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने इसको इधर S लिया था, तो आप इसको R रिजल्टेंट इधर है लेकिन ये सेम फोर्स है तो आप इसको S भी लिख सकते हैं. ओके, सो S इज इक्वल टू 2 बाय रूट 2, दैट इज द थर्ड फोर्स. नेक्स्ट. So this is our next question. The resultant of two forces acting at an angle equal to 5 by 3 of a right angle is perpendicular to the smaller component. The greater being equal to 30 kg force. Find the other component and the resultant. तो इसकी फिगर देखते हैं. सो दिस इज द फिगर एंड ऑब्वियसली ये ध्यान रखना चाहिए आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज ऑलवेज लोकेटेड नियर टू द ग्रेटर फोर्स. अब ये एंगल 90 डिग्री है और 5 बाई 3 ऑफ ए राइट एंगल मींस 150 डिग्री, यानी कि टोटल एंगल बिटवीन फोर्स P and force Q is 150 degree, so this is 60 degree. Simple. So obviously जो resultant है, this resultant, it is nearer to Q force, force Q. So Q is equal to 30 kg. तो हमको यहाँ पर P और R की वैल्यू निकालनी है. सिंपल, दिस इज द क्वेश्चन. सो लेट्स डू इट. ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे इसको. तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करें, यानी कि दिस आर, यानी कि आर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए सी, सो ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू cos 60 degree, means AC that is equal to R equal to AD cos 60 degree, but AD is obviously 30 and cos 60 is 1 by 2, so it is 15 kg. Correct. So R is equal to 15 kg. और अब P की बात करते हैं, इस P की बात करते हैं. Now this is 60, so obviously this is 30 degree, so this is 30 degree. In other words, ऐसे भी बोल सकते हैं कि this is 60, so this is also 60. ठीक है. So now compare, now taking into consideration this triangle, I mean triangle ABC को अगर हम कंसीडर करते हैं, then obviously P upon R is equal to cot 30. Correct. So P is equal to R cot 30 degree. So P is equal to R is 15 and cot 30 is root 3. So this is 15 root 3k. Next question. The magnitude of two forces are as 3:5 and the direction of the resultant is at right angle to that of smaller force. Compare the magnitudes of the larger force and of the resultant. So let's do it. So let us see the figure. So this is the figure and this is force 3P where P is an integer and this force is 5P because the ratio between the two forces is 3 and 5,
3:5। नंबर 2 चीज़ ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज ऑलवेज लोकेटेड नियर द ग्रेटर फोर्स। तो ये ग्रेटर फोर्स है क्योंकि ये नियरर है, ये जो रिजल्टेंट है आर, इट इज नियरर टू 5p बिकॉज this is 90 degree and this angle is definitely less than 90 degree. Okay, let us say this angle is theta. Simple. So we have in triangle ACD, obviously AC upon AD. So this is equal to R upon 5p. हम कोई नहीं, दोनों का रेशियो वर्कआउट करना है, R और 5p का, है ना. So this is equal to cos theta. And in triangle ABC, AB upon BC equal to 3p upon, and obviously BC is 5p. This is equal to, now this is theta, so this is theta. Okay, so 3p upon 5p is equal to, this is perpendicular to hypotenuse, so it is equal to sine theta. Correct. So sine theta is equal to 3/5. बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है कि if sin theta equal to 3/5 then cos theta is equal to 4/5. Correct. So R by 5p equal to 4/5 और हमको निकालना है रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्ज फोर्स एंड रिजल्टेंट, मीन्स 5p upon R equal to 5 upon 4. So 5 upon 4. So the required ratio is 5:4. Simple. Next question. The sum of two forces is 18 and the resultant whose direction is perpendicular to the lesser of the two forces is 12. Find the magnitude of the forces. Okay. So let's see the figure. सेम फिगर है बिल्कुल जैसा हम पिछले दो क्वेश्चन से कर रहे हैं और क्वेश्चन भी बहुत सरल है. दे ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट R is equal to 12 or sum of two forces is 18. So if this force is P, then this is 18 minus P. Simple. And this angle is 90 degrees, so this angle is theta. तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से पहले ही बता देता हूँ कि बहुत सरल क्वेश्चन है. सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 12 है. सो ऑब्वियसली जो दूसरी साइड होगी 5 होगी, हाइपोटेन्यूस 13 होगा और इन दोनों का सम जो है वो 18 होगा. तो इस हिसाब से बहुत सरल क्वेश्चन है. लेट्स डू इट. सो इन ट्राइंगल ACD ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है. So we have AC upon AD is equal to 12 upon 18 minus P and this is equal to cos theta. And in triangle ABC we have AB upon BC, but AB is P and BC is once again 18 minus P. So this is sine theta. So this is 1, this is 2. So from equations 1 and 2 we have cos square theta plus sin square theta equal to 1, means 12 upon 18 minus p whole square plus p upon 18 minus p whole square equal to 1. In other words, 144 plus p square equal to 18 minus p square means 324 minus 36p plus p square cancels out p square, so we have 36p equal to 180 means p equal to 5. So this force is 5 and this force is 13. So obviously larger force is nearer to the resultant. तो ये बिल्कुल ठीक फोर्स आया है हमारा 13 और ये 5. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ टू फोर्सेस P and Q act at such an angle that R equal to P, show that if P is doubled, the new resultant is right angle to Q. Okay, so from here we have R square equal to P square because R is equal to P, equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, means Q into Q plus
2p cos alpha equal to 0, but q cannot be 0, so q plus 2p cos alpha equal to 0. Okay, now if question is says that p is doubled, so let us see a figure. So if this is the resultant in new situation, means this p has become 2p, and suppose this is the angle theta the force q is making with resultant r. तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्लीज डोंट कंसीडर दिस एंगल एज 90 डिग्री. तो मैंने फिगर कॉपी कर ली है पिछली स्लाइड से. ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं. अच्छा, ये ध्यान रखिए कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस and theta is the angle between R and Q. So we know that tan theta is equal to P sin alpha, but now P has become 2P, so it is 2P sin alpha upon Q plus P, but P has become 2P cos alpha. Okay, equal to 2p sin alpha upon, but q plus 2p cos alpha equal to 0, so this is 0, so this is infinity, means theta equal to 90 degree. Okay, next question. The resultant of two forces p and q is equal to q root 3 and makes an angle of 30 degree with the direction of p. Show that p is either equal to or is double q. ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे. ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसकी फिगर देखते हैं. सो दिस इज r इक्वल टू q रूट 3, दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज 30 डिग्री, बिकॉज द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ p. ओके, अब मैं इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है इसमें. सो इन ट्राइंगल ABC we have cos A, this cos A means cos 30 degree equal to AB square plus AC square minus BC square upon 2AB AC. Okay, means cos 30 degree is root 3 by 2 equal to AB square is P square, AC square is Q root 3 whole square means 3Q square minus BC square, now BC is Q, so Q square upon 2AB, so 2P AC, so AC is Q root 3. Okay, means 3PQ is equal to P square plus 2Q square. In other words, P square minus 3PQ plus 2Q square equal to 0. Means P minus 2Q into P minus Q equal to 0. Means P equal to Q or 2Q. Proved. Okay, next question. Two forces equal to 2p and p respectively act on a particle. If the first is doubled and the second increased by 12 kg force, the direction of the resultant is unaltered. Find the value of p. So in this question, this is the force 2p and this is force p, and this is angle theta. Now we know that tan theta is equal to P sin alpha, where alpha is the angle between the two forces. So this is alpha and this force is P upon 2P, and 2P is this force, this plus P cos alpha. Okay, in the
Next situation as given in the question. This force 2p becomes 4p and this p force become p plus 12. Okay, theta remains unaltered. So in the next situation we have tan theta equal to p plus 12 sine alpha and 2p becomes 4p plus p plus 12 cos alpha. Okay, and obviously from 1 and 2 we have p sine alpha upon p into 2 plus cos alpha equal to p plus 12 sine alpha upon 4p plus p plus 2 cos alpha. Okay, sorry, this is p plus 12 cos alpha. Okay, so we have this p cancels out this p and we cross multiply it, so this is, and sine alpha is cancelled out with this sine alpha, so we have 4p plus p plus 12, this is p plus 12. Okay, cos alpha equal to 2 plus cos alpha into p plus 12. So we have 4p plus p plus 12 cos alpha equal to 2p plus 24 plus p plus 12 cos alpha. Okay, so this is cancelled out by this. So we have 2p equal to 24 means p equal to 12. Answer. Simple. Next question. The resultant of two forces P and Q acting at an angle of theta is equal to 2m plus 1 square root of P square plus Q square. When they act at an angle of 90 degree minus theta, the resultant is 2m minus 1 square root of P square plus Q square. Prove that tan theta equal to m minus 1 upon m plus 1. Okay, सरल सवाल है. So we have the formula r square equal to P square plus Q square plus 2pq cos alpha. Simple. Where alpha is the angle between the two forces. So पहली सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन से, so here alpha equal to theta, so we have 2m plus 1 square into p square plus q square equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. ट्रांसपोज कर लिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में, सो वी हैव, और cos थीटा भी निकाल लिया, सो वी हैव cos थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq. सेकेंड सिचुएशन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा. इस स्थिति में वी हैव 2m minus 1 whole square into p square plus q square equal to p square plus q square, and cos 90 minus theta is obviously sin theta, so we have 2pq sin theta. So this way we have sin theta equal to 2m minus 1 whole square minus 1 into p square plus q square upon 2pq. Simple. So we have tan theta equal to ये 2pq से 2pq कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड वी हैव 2m minus 1 whole square minus 1 upon 2m plus 1
whole square minus 1. So this is 4m square minus 4m plus 1 minus 1 upon 4m square plus 4m plus 1 minus 1. So this is 4m square minus 4m upon 4m square plus 4m. So this is m minus 1 upon m plus 1. Okay. Next. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हर हालत में मेरे को इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे लिख सकते हैं। और मिलते हैं अब स्टैटिक्स की नेक्स्ट क्लास में।